डियर स्टूडेंट, आई एम मनोहर पाटिल। आई नो दैट आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। रोटेशनल डायनामिक जो फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी लगता है बच्चों को, क्योंकि उसमें बहुत सारे फार्मूलेज हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप्स अगर रिमेंबर कर लिया, सो यू कैन सॉल्व द एमसीक्यू दे आर आस्किंग द नीट जीओसीटी एग्जामिनेशन। सो फॉर दैट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर अभी तक आपने इसको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट। So now here we have to remember the 10 formulas of moment of inertia for different objects. So now the axis, this is the axis, and now here we have to remember the formula, write down the formula, and this is the shape. So now we go for one by one. The first object is, that is thin ring or hollow cylinder. The moment of inertia about the center. So now this is the diagram of thin ring, moment of inertia about an axis passing through its center. So remember the formula, I equal to mr square. So बहुत important और very simple formula है. You can calculate this formula by using the most important formula, I equal to integration r square dm. और हमें पता है कि जो भी मास रहेगा रिंग का, totally concentrated on the circumference of the circle. So after taking the integration of r square dm, so dm का आंसर आ जाएगा कैपिटल M और एम आर स्क्वायर। इसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया एम आर स्क्वायर। रिमेंबर नेक्स्ट, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर thin ring, the axis passing along its diameter. So remember the formula, I equal to half m r square. So very simple formula है. Next shape, the moment of inertia for uniform disc or solid cylinder. Now the axis is central, means the axis passing through its center about which the object is rotated. Now here we consider the object is uniform disc or solid cylinder. So remember the moment of inertia, that is half m r square. So next object is again moment of inertia. We have to calculate for uniform disc, but now the axis is passing along the diameter. So what is the formula for diameter? That is 1 upon 4 m r square. So now here we complete the four formulas, moment of inertia for different four shapes. Most importantly, remember, so whenever there is a diameter, only divide by 2. So रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अबाउट सेंटर, डायमीटर का 1/2 एक्स्ट्रा लगा लिया. हाउ टू रिमेंबर. नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क सॉलिड सिलेंडर अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज 1/2 एम आर स्क्वायर. इसको अगेन डिवाइड बाय 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, सो दैट इज 1/4 एम आर स्क्वायर. सो यू कैन रिमेंबर द फार्मूलाज. These are the most important formula. You can take the screenshot and remember, practice all formulas एटलीस्ट 7 टाइम्स. आपको इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है. सो यू कैन रिमेंबर ऑल फार्मूलाज, ताकि आप इस पे जो भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे नीट जेओसीटी, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. सो टेक स्क्रीनशॉट. वी गो फॉर द नेक्स्ट. So next shapes is, that is thin wall hollow sphere. The now it is rotating about its axis passing through its center. Remember, that is 2/3 moment of inertia is 2/3 mr square. So this is the most important formula. Next shape, that is solid sphere. So आपको ये याद रखना है, ये बहुत IMP है. Many times they ask the question on the solid sphere. So whenever the solid sphere is rotating about its axis passing through its center, so remember the moment of inertia is 2 divided by 5 m r square. So next shape is, that is thin uniform rod or rectangular plate. So whenever the axis perpendicular to its length and passing through its center. So now this is the diagram of rod or thin rod or rectangular plate. We consider that this is the axis perpendicular to its length and passing through its center. So remember the formula, very simple, that is 1/12 m l square. So where m is the mass, we know that l is the length of that यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, मतलब वो सेंटर से पास हो रहा है या फिर अलोंग द डायमीटर है, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद रखना है. नेक्स्ट स्टेप सिमिलर है एज अ 7, दैट इज thin uniform rod and rectangular plate.
सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको एक्सिस का पोजीशन अच्छे से याद रखना है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ. नाउ दिस इज द डायग्राम, look at the diagram. The axis is perpendicular to the length, axis is perpendicular to the length. About the axis, now the rod is rotating, and most importantly about one end. So now there are the two ends of the rod or the rectangular plate. One end के regarding में वो rotate हो रहा है. So remember the formula, 1/3 ml square. So these are the four most important shapes we already we completed. So the moment of inertia for hollow sphere, axis about central, remember 2 by 3 mr square. Moment of inertia for solid sphere, whenever the axis passing through its center, remember 2 by 5 mr square. Then for the uniform rod, just remember the axis passing through perpendicular to its length, but now first passing through its center, 1 by 12 ml square, or about one end, that is 1 by 3 ml square. So very simple formulas you can remember. Take the screenshot, इसको 7 times आपको लिख के remember करना है, ताकि आप इस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. So write down the fast. Next. So last two shapes, so we complete the 10 formulas after completion of these two shapes. So that is uniform solid right circular cone. Now the axis is passing through its center, it is rotating about an axis passing through its center. Remember the formula, that is 3 by 10 mr square. Next, so uniform hollow circular cone. Now the axis is passing through its center. This is the diagram of hollow circular cone. Axis is passing through the center, about which now the cone is rotating. So remember the formula, half mr square. So now in such way that we complete the all 10 formulas. Very simple. अगर आपको अगर ऑल फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से रिमेंबर है तो सो आप आसानी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अच्छे से कर सकते हो. So I hope you will understood all formulas and you can remember the all formulas. If you have any doubt, you can text me so I can answer that. And most importantly, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट तो जरूर करना है. थैंक यू वेरी मच.